Good evening, Namaskar. Myself, CA Ashish Gupta. I am presenting this presentation on e-bank branch audit. नमस्ते दोस्तों, मेरे सीए भाइयों और बहनों। मैं ये प्रेजेंटेशन प्रेजेंट करने जा रहा हूँ ई बैंक ब्रांच ऑडिट पे। जैसे कि हम सब अवेयर हैं कि दी बैंक ब्रांच ऑडिट इज राउंड द कॉर्नर, so we should be beforehand prepared so that we can do this exercise in a very diligent manner. Statutory audit of banks can be defined as an audit to ensure that the financial statements and the books of accounts presented to the regulators and the public are fair and accurate. It is an audit that is prescribed by different statutes such as Income Tax, Reserve Bank of India, Companies Act, and so on. Statutory bank audit will not be conducted by the following private sector banks, and the said exercise will be done by the central statutory auditor. These are the Karnataka Bank, Catholic Syrian Bank, which is now called CSB Bank, South Indian Bank. With the ABG shipyard scam fraud of rupees 22,842 crores, statutory branch auditors have to take due care and diligence while conducting the bank branch audit exercise. You see, friends, we are aware that the statutory branch audit is being conducted by the Reserve Bank of India. So, this is a statutory requirement which the Reserve Bank of India has given to the public sector banks and the private sector banks, and the autonomy has been given to the public sector banks to select their auditors. Just to inform you that till now, statutory branch audit was conducted by the private sector banks also. But from this year onwards, the following banks, the Karnataka Bank, the CSB Bank, and the South Indian Bank, the whole of the branch bank audit exercise will be done by the statutory central auditors. We all of us are aware of the ABG shipyard scam fraud, which is very well there in the newspapers, Google, Insta, Facebook, which is one of the biggest scams which have been unearthed, which wherein the State Bank of India is the lead banker. So, as the statutory bank auditors, we need to be very cautious, and we need to exercise due care and diligence while conducting the statutory bank branch audit exercise. दोस्तों, हम सबको पता है कि ये जो बैंक ब्रांच ऑडिट है, ये जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, ये वो एक्सरसाइज कंडक्ट करवाता है पब्लिक सेक्टर बैंक्स के लिए और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के लिए। पब्लिक सेक्टर बैंक्स को ऑटोनॉमी दे दी गई है बहुत साल पहले कि वो अपना ऑडिटर खुद सेलेक्ट कर सकते हैं। जस्ट टू इन्फॉर्म यू कि जो जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स कुछ थे जो स्टैट्यूटरी ब्रांच ऑडिट कराते थे, अब वो एक्सरसाइज सेंट्रल स्टैट्यूटरी ऑडिटर ही करेंगे। ये वो बैंक हैं जब अब जहाँ पे अब सिर्फ सेंट्रल स्टैट्यूटरी ऑडिटर ही करेंगे और ब्रांच ऑडिटर्स को वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। वो है कर्नाटका बैंक, सीएसबी बैंक, साउथ इंडियन बैंक। दोस्तों, आप सबने एबीजी शिपयार्ड का स्कैम सुना होगा। ये बहुत बहुत बड़ा स्कैम है जहाँ पे एसबीआई लीड बैंकर है। तो एज स्टैट्यूटरी ब्रांच ऑडिटर्स हमें बहुत केयरफुली, बहुत एहतियात से इस बारी की ऑडिट एक्सरसाइज करनी है जिससे कि हम सही ढंग से रिपोर्ट कर सकें। To begin with bank branch audit, the following steps needs to be followed either manually or and digitally. Acceptance of appointment by the respective bank and signing of confidentiality and fidelity agreement and do's and don'ts. Please ensure that in case of new allottees, please give acceptance for only one public sector bank. The next step is to give intimation to the previous auditor, preferably on email, so that we can save time and spend maximum time on bank branch audit exercise. SBA needs to issue the audit engagement letter in accordance with the standards on auditing SA 210, agreeing the terms of audit engagement. The next step is to plan your audit program in such a manner that in case of allotment of 2 to 3 branches,
adequate attention is given to all the branches. Friends, you see, since due to COVID and due to digitization, and as rightly said by the Prime Minister of India, Modi ji, we need to move towards digitization. And this is the next thing coming up in the years to come. And we have been seeing that most of our exams have been conducted online, like India's exam has been conducted online, forensic exams we are being conducted online. So as far as the bank branch audit exercise is concerned, we here concentrate mainly on e-bank audit, meaning thereby whatever documents we can procure from the branch through digital media, we should do that and should try and do the exercise as far as possible from our offices only. So the first thing is, as soon as we receive the appointments, we should sign the confidentiality and fidelity agreements and do's and don'ts as prescribed by the respective banks. In case of new allottees, when any firm or the proprietary firm gets a new allotment, please give acceptance for only one public sector bank. For example, you have given the allotment of both, you receive an allotment of both Canara Bank and State Bank of India. So please accept only one bank. In case you accept more than one banks, your name would be disqualified by the Reserve Bank of India. So please ensure that you give acceptance only for one bank. The next step is that we need to intimate the previous auditor. When we get the allotment letter, we get a list of the previous auditor for the branches which have been allotted to us. So we should write an email to all those auditors so that we can save on time and can spend maximum time on bank branch audit exercise. You see, the audit engagement letter should be in accordance with the standards as laid down by the Institute of Chartered Accountants of India, which is SA 210, agreeing to the terms of audit engagement. The next step is that we should plan a audit program in such a manner that in case we get 2 to 3 allotments, we give adequate attention to all the branches. दोस्तों, आप सबको पता ही है कि जैसे ही अलॉटमेंट आती है तो उसके साथ कुछ एग्रीमेंट्स आते हैं, कुछ कॉन्फिडेंशियलिटी एग्रीमेंट्स आते हैं, फिडिलिटी एग्रीमेंट्स आते हैं, डूज एंड डोंट्स आते हैं। तो सबसे पहले हमें वो साइन करके स्कैन कॉपी अपने रिस्पेक्टिव बैंक को भिजवानी है। एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कहा कि हमें डिजिटाइज वर्ल्ड की तरफ जाना चाहिए और आजकल हम देख रहे हैं कि बच्चों के एग्ज़ाम्स भी ऑनलाइन हो रहे हैं, हमारे इंडियस के एग्ज़ाम्स भी ऑनलाइन हो रहे हैं, हमारे फॉरेंसिक के एग्ज़ाम्स भी ऑनलाइन हो रहे हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, कोशिश करके हैं हम जब ब्रांच विज़िट करें उससे पहले ही हम अपने ऑफिस में मंगा लें और उनको डिजिटली मंगा के, डिजिटल मीडिया के थ्रू मंगा के हम अपने ऑफिस में ही उनको स्क्रूटनाइज करें। इससे हम ई ऑडिट की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देंगे। जहां जिन दोस्तों को मेरे नई अलॉटमेंट मिलती है तो प्लीज इंश्योर करें कि वो एक ही पब्लिक सेक्टर बैंक की जो अपॉइंटमेंट है वो ही एक्सेप्ट करें। फॉर एग्जांपल, आपको कैनरा बैंक भी मिल गया और एसबीआई की भी अलॉटमेंट आ गई तो आप एक ही बैंक को हाँ करिएगा, क्योंकि अगर आपने दोनों बैंकों को हाँ कर दी तो आरबीआई आपको डिस्क्वालीफाई कर दीजिए। तो आप प्लीज ऐसा कोई स्टेप मत करिए। इसके अलावा जब हमें अलॉटमेंट लेटर मिलता है तो उसमें प्रीवियस ऑर्डर की सारी डिटेल्स होती है, तो प्रेफरेबली आप फिर से वो उसको ईमेल, मतलब हम डिजिटाइजेशन की तरफ मूव करें और हम उसको ईमेल भेजें जिससे कि हम मैक्सिमम टाइम स्पेंड कर सकें अपनी बैंक ब्रांच ऑडिट एक्सरसाइज में। जो हमारी ऑडिट एंगेजमेंट होगी वो हमारे स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग SA 210 के अलाइन होनी चाहिए, जो हमारा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया प्रिस्क्राइब करता है, जिसे हम कहते हैं अग्रीइंग टू द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज आती है कि जो हम अपना ऑडिट प्रोग्राम प्लान कर रहे हैं वो कुछ इस तरीके से प्लान करें कि अगर हमें 2 से 3 ब्रांचें मिलती हैं तो हम एडिक्वेट अटेंशन दे सकें सारी ब्रांचेस को। Statutory bank branch auditor should conduct a preliminary inquiry to know the nature, size, and category of bank branch to be audited. Identify the branch powers and the powers assigned to zonal offices and regional offices so that we are clear on reporting hierarchy. Before initiating the bank branch audit, we should ensure that the digital signature certificates are ready, and we need to inform the branch head accordingly and send a mail regarding our
audit program. More importantly, we need to educate and train our staff, including articles and audit systems, for the said exercise and keep a bank branch audit session internally. We should include latest RBI circulars issued regarding bank branch audit and make ourselves aware of the same. The auditor's firm and its personnel should comply with professional standards and regulatory and legal requirements as per SQC 1, quality controls for firms that perform audit and review of historical financial information and other assurance and related service engagements. Friends, when we begin this particular exercise, we should make a preliminary inquiry about the nature of the branch and the size of the branch, like whether it is an urban branch or a rural branch, whether it is a retail asset branch or whether it's an SME branch, or whether it is a clearinghouse, so that we have a clear understanding that what type of branch we are going to audit and what are the requirements for that particular branch. Secondly, we should clearly understand the reporting hierarchy, that what are the powers of the branch head, what are the powers of the zonal head, and what are the powers of the regional officers. So that depending upon the irregularities which have been noticed by us, we can report them accordingly. As per RBI, if there is a fraud, if we unearth any fraud in any of the branches, we can directly report to the RBI and to the MD of that respective bank. Next important thing is that we should have a digital signature certificate ready, because nowadays most of the reports and the certificates which are required to be signed by the branch auditor are signed digitally. So we should inform the branch head accordingly and should mail our audit program to him. Most importantly, what we need to do is that we should first educate and train our audit assistants and article assistants in such a manner that the entire team which goes for the bank audit is aware of the latest RBI circulars, and we can do that exercise in a very fruitful manner. The audit firms and its personnel, we should comply with the professional standards and the regulatory requirements as per SQC 1 as laid down by the Institute of Chartered Accountants of India. दोस्तों, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है कि जब हमें 2 या 3 ब्रांचें अलॉट होती हैं, तो हमें ये समझना पड़ेगा कि वो ब्रांच का साइज़ क्या है और वो किस तरीके की ब्रांच है। क्या वो रूरल ब्रांच है? कि वो अर्बन ब्रांच है? वो रिटेल एसेट ब्रांच है जहाँ पे टर्म लोन्स जैसे कि हाउसिंग लोन और कार लोन्स ज़्यादा हैं? या वो एक कैश क्रेडिट ब्रांच है, एसएमई ब्रांच है जहाँ पे एसएमई लोन ज़्यादा है? या वो एग्रीकल्चरल ब्रांच है या वो क्लियरिंग हाउस है? उसको अंडरस्टैंड करने का सबसे बढ़िया, जब हम वो अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो उसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि हम जो अपना ऑडिट प्रोग्राम है उस तरीके से बना सकते हैं। उसके बाद जो हमारी रिपोर्टिंग हायरार्की है कि जी जो ब्रांच हेड है उसकी क्या पावर्स है, जो जोनल हेड है उसकी क्या पावर्स है, जो रीजनल ऑफिस है उसकी क्या पावर्स है, क्योंकि कल को अगर हम कोई इरेगुलरिटी निकालते हैं तो हम उसको कैसे रिपोर्ट कर सकते हैं और किस किस को रिपोर्ट कर सकते हैं। आरबीआई क्लियरली कहता है कि अगर हम कोई फ्रॉड, हमें नजर आता है कि ब्रांच में कोई फ्रॉड हो रहा है और हम उसे निकाल देते हैं, तो हम 1 करोड़ से ऊपर का फ्रॉड डायरेक्टली आरबीआई को और उस बैंक के रिस्पेक्टिव मैनेजिंग डायरेक्टर को रिपोर्ट कर सकते हैं। इसके बाद आप लोगों ने देखा होगा जो ब्रांच ऑडिट एक्सरसाइज कर रहे हैं कि आजकल जितने भी सर्कुलर्स होते हैं, जो हमारे रिपोर्ट्स होती हैं, सर्टिफिकेट्स होते हैं, वो डिजिटली साइन होती हैं। तो हमें चेक करना कर लेना चाहिए कि जो हमारे डिजिटल सिग्नेचर्स हैं वो हमारे एक्सपायर तो नहीं हो रहे हैं। अगर ऐसा ही कोई सिचुएशन है तो हमें उनको रिन्यू करा लेना चाहिए और ब्रांच हेड को भी अकॉर्डिंगली इन्फॉर्म कर देना चाहिए। और जो हमारा ऑडिट प्रोग्राम है, डिपेंडिंग अपॉन द साइज एंड नेचर ऑफ द ब्रांच, वो हमें उसको मेल कर देना चाहिए। उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है कि देखिए हमारे पास आर्टिकल्स होते हैं, ऑडिट असिस्टेंट्स होते हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट काम में इन्वॉल्व रहते हैं। तो बिफोर ऑडिट एक्सरसाइज हम उनको एक अंडरस्टैंडिंग दे दें कि बैंक ब्रांच ऑडिट कैसे करना है, आरबीआई के सर्कुलर्स क्या हैं और क्या क्या चीज़ें देखनी है और किस तरीके से देखनी है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ आती है कि हमें एक प्रोफेशनल अप्रोच, एक प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स मेंटेन करनी है जो हमारा इंस्टीट्यूट प्रिस्क्राइब करता है। The bank branch auditor should be polite and should adopt a professional approach and should ask for the following documents: previous statutory auditor's report, including long form audit report, that is LFAR, memorandum of changes MOC, if any, last 3 months concurrent audit report, and list of persisting irregularities, if any,
last risk-based internal audit report and list of persisting irregularities, if any, last RBI reports, if any. Please compare all these and scrutinize borrower accounts which are common in all the reports. You see, to begin with the bank branch audit, there are certain reports which we require from the branch. That is the previous statutory auditors report along with the LFAR, the memorandum of changes, if any, last 3 months concurrent auditors report, last 3 months internal audit report, and the last RBI reports. By having a look at all these reports, we will have an understanding that what all borrower accounts are there, where the problem persists and the irregularities persist. And if some of the borrowers, like 3 4 borrowers, are there in all the reports, then we can pay our major attention to all those borrower accounts and we can scrutinize them accordingly. दोस्तों, जब हम ब्रांच विजिट करें, या तो हम ब्रांच विजिट करें और ये सारे कागज मांगे, एक तरीका है कि की सारी रिपोर्ट्स हम उनसे ईमेल पे मंगा के इनको स्क्रूटनाइज करें. इसमें जो प्रीवियस ऑडिटर ने अपनी ऑब्जर्वेशंस दी थी एलएफएआर में, या जो उसने एमओसी बनाई थी, वो हम मंगा सकते हैं. पिछले 3 महीने की कॉन्करेंट ऑडिट रिपोर्ट मंगा सकते हैं, लास्ट इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट मंगा सकते हैं, और आरबीआई का कोई ऑडिट हुआ हो तो हम मंगा सकते हैं. इन सारी रिपोर्ट्स को अगर हम कंपेयर करते हैं तो हो सकता है 2 से 3 या 4 या 5 हमारे कोई बोरोवर अकाउंट्स आए जो हर एक रिपोर्ट में कॉमन हो. तो उन बोरोवर्स पे हम अटेंशन पे कर सकते हैं, क्योंकि उन अकाउंट्स में परसिस्टिंग इरेगुलरिटीज होंगी तो हम उनको अच्छे से स्क्रूटनाइज कर सकते हैं. तो इसमें हम टाइम भी बचाएंगे और मेजर चंक ऑफ हमारा जो ऑडिट है वो कवर भी हो जाएगा. Bank branch auditors should also obtain an understanding of the organizational structure, more specifically the functions of relationship managers. Branch auditor should ask for internal circular of charges and fees from the respective bank branch. Banks closing circulars. These guideline circulars cover the process and policies followed by the bank. Bank auditor should obtain an understanding of these circulars. Statutory bank auditor should look for safety aspects of the branch and should test check the theft alarm system, fire alarm system, inquiry from security guards, arrangement at the branch and the linked ATMs, check cyber security including safety arrangements for the server, etc. You see, when we start conducting the audit, this is something also we can ask on the emails, the internal circular of charges and fees from the respective bank. So having those circulars in hand, we will have a rough idea that what are the type of charges the bank charges from the customers or from the borrowers, and what are the fees which the banker charges from the respective borrowers. Along with that, we should also ask for concessional circulars like festival housing scheme or the New Year scheme, wherein certain charges like processing fees and other charges have been waived off. So we should ask for all these circulars and should jot down the important points and make a summary of these. Along with the allotment letter, we are given a bank closing circulars. These guidelines and circulars basically cover the policies and the scope of audit. So we should very well go through them and should have an understanding of them. The next step is when we enter the branch, we should on test check basis should check the theft alarm system, the fire alarm system, make an inquiry from the security guards, or look at the condition of the server just to have a look of the ambience that whether the functioning of the branch is done in a proper manner or not. दोस्तों, जब हम ब्रांच विजिट करें उससे पहले हम ईमेल पे ही ये इंटरनल सर्कुलर ऑफ चार्जेस और फीस मंगा सकते हैं. तो उससे हमें एक ये आइडिया हो जाएगा कि जो बैंक है, जो ब्रांच है, वो किस प्रोडक्ट पे क्या क्या फीस चार्ज कर रही है या क्या वो फीस ले रही है, कि जैसे हाउसिंग लोन पे क्या चार्जेस लग रहे हैं, प्रोसेसिंग चार्जेस लग रहे हैं, इंटरेस्ट क्या लग रहा है, किस तरीके से लग रहा है. साथ के साथ जो फेस्टिवल हाउसिंग स्कीम्स होती हैं, जब कंसेशंस होते हैं या दिवाली होती है या न्यू ईयर होती है, तो बैंक कुछ सर्कुलर्स निकालता है कि जैसे हाउसिंग लोन पे या कार लोन पे चार्जेस वेव्ड ऑफ है. तो साइड बाय साइड हम वो सर्कुलर मंगा के उसका एक समरी बना सकते हैं और अपने पास रख सकते हैं कि इस पीरियड से इस पीरियड तक ये चार्जेस नहीं लगेंगे. तो जब हम वो चार्जेस चेक करेंगे सिस्टम में तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी. इसके अलावा जब हमें अलॉटमेंट लेटर मिलता है तो एक गाइडलाइन सर्कुलर मिलती हैं, तो उसमें क्लियरली डिफाइंड होता है कि हमारा स्कोप क्या है बैंक ब्रांच ऑडिट का. तो अगर हम उसको गो थ्रू कर लेंगे तो एक हमें
फेयर अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी कि हमें क्या क्या चीज़ें कवर करनी है और कैसे कवर करनी है। उसके बाद जब हम ब्रांच पहली बारी विजिट करते हैं तो हम टेस्ट चेक बेसिस पे ऑडिटर सॉरी ब्रांच हेड को कह सकते हैं कि सर ये जरा अलार्म सिस्टम चला के दिखा दो, थेफ्ट अलार्म सिस्टम चला के दिखा दो, फायर अलार्म सिस्टम चला के दिखा दो, सिक्योरिटी गार्ड से पूछो कि सर कितने घंटे की शिफ्ट है, 2 गार्ड्स आते हैं कि नहीं आते हैं, लिंक्ड एटीएम की क्या पोजीशन है, सर्वर को जाके देखिए कि सर्वर की क्या कंडीशन है, क्या उससे और सिस्टम्स लिंक्ड हैं कि नहीं है। तो वो सारी चीज़ों को इंक्वायरी आप करेंगे तो आपको एक फील आ जाएगी ब्रांच की, ब्रांच में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है और कहाँ तक ठीक हो रहा है। इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, IFCOFR. RBI has made reporting on IFCOFR for public sector banks mandatory from financial year 2021. Some of the branches are selected for IFOCFR, and the statutory branch auditor is required to report on IFCOFR of that branch. Guidance note on audit of internal financial controls or financial reporting is attached herewith for your reference. You see, from financial year 2021, the RBI has made mandatory that in respect of large sizes branches, like the firms having of category 1, category 2 last year might have been allotted certain branches in respect of which the internal financial controls over financial reporting is required to report in respect of that particular branch. And this and the central auditor relies on the information and the reports framed by the branch auditor. So we should have a fair understanding of ICFOR, and the guidance wrote in this respect has been attached here with. दोस्तों, फाइनेंशियल ईयर 2021 से आरबीआई ने मैंडेटरी कर दिया है कि कुछ ब्रांचेस का जिनका साइज बड़ा है उनका इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अकॉर्डिंगली ब्रांच ऑडिटर करेगा, और हमारी रिपोर्ट पे जो हमारा सेंट्रल स्टैट्यूटरी ऑर्डर होता है वो रिलाय करता है। तो ये गाइडेंस नोट यहाँ पे अटैच्ड है, आप प्लीज इसको रेफर कर सकते हैं। पिछले साल भी जो कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 फर्म से उनको बिग साइज ब्रांचेस मिली थी जहां पे इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करी गई थी। तो प्लीज आप इस गाइडेंस नोट को गो थ्रू करिए और ध्यान में रखिए। Statutory bank auditor should do a cash verification of cash at bank branch and at the linked ATM. Statutory bank auditor should also inquire about cash holding limit and should report the limit exceeding in the LFAR. Auditors should also inquire about rotational duties of key management branch officials, specifically the cashier, for effective operations. Friends, you see, the best way to do the cash verification is as soon as you enter the branch, do a cash verification, because it is just like a surprise verification, so that in case there are any variations, you will come to know. Secondly, the ATM, either you check in the morning or you check in the evening. Preferably, if you go early in the morning, you can check the ATM right away. And if there are any discrepancies in the ATM, you can report them accordingly in the LFR, that is the long form audit report. Every branch has a cash holding limit, and they maintain a register wherein they set the limits and write down the daily cash amount which is there available at the branch. So whatever days the cash holding limit has been exceeded, you are supposed to report that in the LFAR. Please ensure when you do the cash verification, after that, when you sign the register, the cash register, and give it back to the branch head, please do write that cash verified and handed over to the branch, wherein you say that you have verified the cash, but the same is in the custody of the branch head. So please be sure to note that. Also, you need to inquire that the cashier is on a rotation on regular basis, because if the same cashier is sitting for quite long at the same position, it might lead to a bad governance. So it is preferably that the cashier is rotated on regular basis. दोस्तों, सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि जब आप ब्रांच एंटर करें, जल्दी जाएं और उसी दिन हैंड टू हैंड कैश वेरीफाई कर लें, साथ में एटीएम वेरीफाई कर लें, तो उससे जो भी कमियां होंगी आपको नजर आ जाएंगी। हर एक ब्रांच की एक कैश होल्डिंग लिमिट होती है। अगर आपको लगता है जब आप कैश रजिस्टर में जाएंगे तो आप देखेंगे कि जो कैश होल्डिंग लिमिट है वो एक्सीड हो रही है, तो वो सारे डेट्स नोट कर लीजिए और एलएफआर में नोट कर दीजिएगा।
कैशियर से जरूर से इंक्वायर करेगा कि वो कैश की पोजीशन पे कितने ड्यूरेशन से बैठा है, क्योंकि वो जो रोटेशन ऑफ ड्यूटी है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है गुड गवर्नेंस के लिए। तो ये इंश्योर करेगा कि जो कैशियर है उसकी ड्यूटी रेगुलर बेसिस पे रोटेट हो रही है। Statutory bank auditor should study the latest income recognition classification circular as issued by RBI. That is DOR number STR REC 55 2104 2021-22। ये सर लेटेस्ट सर्कुलर है विच हैज बीन इशूड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि ये हमारे लिए बाइबल की तरह है, प्लीज इसको गो थ्रू करिए, ये बहुत बढ़िया है। नेक्स्ट पार्ट हम अपने नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे विच विल बी बेसिकली ऑन KYC and extracts of balance sheet and profit loss account. Thank you. Namaste.